नमस्कार बच्चों. Today we'll start with composition of functions. Students, let A, B and C be three non-empty sets, and let F be a function defined from set A to set B, and G be a function defined from set B to set C. Now, देखिए यहां पे आप इस चीज को समझिए. पहले आप ये फिगर देखिए. Let A, B and C be three non-empty sets. मतलब ये इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं. A से B पे जो फंक्शन डिफाइंड है इट इज F and B to C the function defined is G. देखिए अब A से B पे अगर एक फंक्शन डिफाइंड है then it is very clear that for all elements that belongs to set A, मान लेते हैं वो एलिमेंट्स है X, then for all X that belongs to set A there is a unique image. There is a unique image of X under the rule F in set B, and that is f of X. Is it clear? देखिए f एक फंक्शन है जो सेट A से सेट B पे डिफाइंड है. तो इसका मतलब सेट A के हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज सेट B में होगी अंडर द रूल F. तो आपने कहा अगर यहां पे कोई X है तो अंडर द रूल F उसकी एक यूनिक इमेज सेट B में है, दैट इज f of X. नाउ f of X इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B. सेट B से सेट B पे एक फंक्शन है डिफाइंड जो कि है G. तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B हैव अ यूनिक इमेज इन सेट C अंडर द रूल G. तो f of X की एक यूनिक इमेज होगी सेट C के अंदर अंडर द रूल G, एंड वो होगी G ऑफ दिस एलिमेंट, दैट इज G ऑफ fx. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि X की एक यूनिक इमेज है fx और fx की एक यूनिक इमेज है G ऑफ fx. इसका मतलब A से C में, देखिए A से C में X की एक यूनिक इमेज 100% होगी एंड दैट इज G ऑफ fx. और उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं GOF, दैट इज आवर कंपोजिशन फंक्शन. यहां पे मैंने एक चीज लिख के दी है, आप ध्यान से देखिए. फॉर ईच x दैट बिलोंग्स टू सेट A देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट f of x दैट बिलोंग्स टू सेट B, and corresponding to f of x that belongs to set B there exists a unique element G of fx that belongs to set C. Thus, for each x that belongs to A, there is associated a unique element G of fx of C. So, from f and G, we can define a new function from A to C. This function is called the composition of f and G and is denoted by GOF. मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया. क्लियर? यहां पे कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है. यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स. फर्स्ट, GOF is composite of F and G, and FOG is composite of G and F. The existence of fog and GOF is independent. Clear है? The existence of fog and GOF is independent of each other. That is, if fog exists, then GOF may or may not exist, and vice versa. Third, in general, fog is not equal to GOF. There are some questions जिनके अंदर हमारे को fog और GOF equal मिलते हैं, but in general, fog is not equal to GOF. Fourth, associative law. देखिए तीन फंक्शंस अगर हमारे पास आ जाए f, g और h, then fog of h is equal to f of g of h. तो यहां पे ये associative law satisfy करता है. Fifth is, if f and g are two functions which are defined from R to R, then fog, GOF, FOF and GOG are all defined and they are defined from R to R. Sixth, if GOF is 1 1, देखिए अगर GOF 1 1 है then f is also 1 1 function. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. Seventh is, if GOF is onto then G is onto. If f and g are 1 1 and onto, देखिए f and g दोनों फंक्शन अगर 1 1 onto है then GOF is also a 1 1 and onto function. अगर f and g are bijective function, बच्चों रिमेंबर दिस, if f and g दो फंक्शंस हैं f और g, जैसे यहां पे हमने एग्जांपल लिया f and g, if f and g both are bijective functions then GOF, जो GOF निकलेगा वो भी क्या होगा बच्चों, bijective. तो अगर मैं इसी एग्जांपल में आपके लिए कहूं कि f is my bijective function, g is again a bijective function, then it is 100% clear that GOF is also a bijective function. Clear, students? Next, there are two questions from this composition of functions. First is,
if f and g are two functions given by the f is a function whose elements are 1 2 3 5 4 1 and g is a function with elements 2 3 5 1 and 1 3 as ordered pairs, then write fog and cough. Students, it is given that f is this function, so it is very much clear that f of 1 is 2, f of 3 is 5 and f of 4 is 1, and g is a function, so g of 2 is 3, g of 5 is 1 and g of 1 is 3. Now we need to find fog, that is f of gx. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, देखिए f of gx, g के लिए x होगा 2 5 and 1, so fog 2 fog 5 and fog 1, हमें ये तीनों निकालने हैं, 2 5 and 1 इनके लिए, 2 के लिए 5 के लिए और 1 के लिए. So fog2 is f of g of 2, and what is g of 2? G of 2 is 3 and f of 3 is 5. So is it clear that fog of 2 is 5? Similarly, we will find fog of 5 and fog of 1, that is 2 and 5. So fog is 2, 5 ordered pair 5, 2 and ordered pair 1, 5. Similarly, we will find gof, that is g of fx, that is g of f of fx. For f, the x are 1, 3 and 4. So we'll write 1, 3 and 4. This is f of 1, f of 3, f of 4. F of 1 is 2. ठीक है, f of 3 is 5, तो f of 3 की जगह हम लोग 5 लिखेंगे, and f of 4 is 1, तो f of 4 की जगह हम 1 लिखेंगे. And what is g of 2? G of 2 is 3, g of 5 is 1 and g of 1 is 3. Hence gof is 1 ordered pair 1, 3, ordered pair 3, 1 and ordered pair 4, 3. Is it clear? Now if f and g are functions defined from set of real numbers to set of real numbers, अगर देखिए f और g रियल नंबर टू रियल नंबर है, इसका मतलब f of g एग्जिस्ट करेगा, g of f is also defined, f of f is defined and g of g is defined, and all the functions are defined from set of real number to set of real numbers. So fx is cos x and g of x is 3x square. Then find fog, gof, fof, gog. लास्ट में इसने पूछा है इज फॉग इक्वल टू गॉफ, तो देखिए देखते हैं आगे. fog इज f of gx, देखिए ये क्लियर है, fog इज f of gx, gof is g of fx, f of f is f of fx and gog is g of gx. अब what is gx? gx is 3x square, तो हम लोग gx को 3x square से रिप्लेस करते हैं. and what is f of 3x square? देखिए f of x is cos x, we need to find f of 3x square. तो f of 3x square के लिए हम लोग क्या करेंगे? we will replace this x with 3x square. तो हम इस x को रिप्लेस करेंगे 3x square से, तो cos of 3x square. Similarly, this is gof, that is g of fx. What is fx? Cos x. Now we need to find g of cos x. g of cos x का मतलब we need to replace this x with cos x. तो g of x is 3x square. g of cos x is 3 of cos x का whole square, that is 3 cos square x. f of f is f of fx, and what is fx? Cos x, that is f of cos x. f of cos x का मतलब we need to replace x with cos x, तो cos of cos x. gog is g of gx, g of, now what is gx? gx is 3x square, so g of 3x square. Now g of 3x square, it means we need to replace this x with 3x square, तो 3 बाहर रहेगा, इस x को हम रिप्लेस करेंगे 3x स्क्वायर से, एंड दिस इज होल स्क्वायर. 3 3 9x4, 9 3 27x4. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इज फॉग इक्वल टू गॉफ. देखिए बच्चों, क्लियरली cos of 3x square, fog is what? Cos of 3x square is not equal to gauge, that is 3x cos square x for x is equal to 0. अगर आप x के लिए 0 पुट करते हैं, then on the left hand side you will get 1 and on the right hand side you will get 3 into 1, that is 3, and 1 is not equal to 3. It implies fog is not equal to gauge. Clear students? Thank you so much.